हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ रीथ एकेडमी। माई सेल्फ अनूप वर्मा। और यहाँ पर हम हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं, तो आप हमसे जुड़कर हायर मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस का पेपर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, 2 to 3 लेक्चर्स रिकॉर्ड करें। दिस इज थर्ड लेक्चर बिकॉज द फर्स्ट वाज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर, तो उसको हम एज ए लेक्चर नहीं काउंट करते हैं, उसमें हमने सिलेबस को डिस्कस करा है। तो अभी 2 लेक्चर हमने पढ़ाए हैं, जिसमें हमने डेफिनेट इंटीग्रल और सम इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूलाज फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ाए थे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ अ सम, है ना। तो हम कैसे डेफिनेट इंटीग्रल को लिमिट के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन दो वी विल नॉट गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट, बट अप्रोक्सीमेट रिजल्ट वी विल गेट। ओके, सो दिस रिजल्ट इज मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज आज के लेक्चर से आपके एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चंस भी आएंगे। सो यू जस्ट फोकस ऑन दिस लेक्चर कि कैसे हमारे पास चीजें हो रही हैं और कैसे हमें टेक्निक्स यूज करना होता है, कैसे हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। तो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन दिस लेक्चर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। So we know definite integral. So we have suppose that we have a definite integral. We have to calculate this is a to b fx dx, and we know that what is the definite integral. Okay, so if I am going to draw, let's some draw. Suppose that I'm just going to draw. Just a second. I'm just draw. Some figure is there. I'm just taking this one. Suppose that I'm taking the 2D because we have to draw some graph. Okay, so I'm just drawing a graph. Suppose that I'm just draw this graph. Okay, so this is some function. Suppose that this is a function y is equals to fx. Okay, and we want the integral of this fx from a to b. So I'm just taking this is your point a and this is your point b. सो बेसिकली जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो क्या निकलता है? दैट इज एरिया बाउंड बाई दिस कर्व with this positive x-axis. This is positive x-axis, and here this is negative x-axis, and then the y, and this is y dash. Okay, सो बेसिकली वी आर कैलकुलेटिंग दिस एरिया। ये जो एरिया है, इस एरिया को हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज गिव द वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, लेट अस कैलकुलेट दिस एरिया बाय अनदर वे। ठीक है, तो व्हाट इज द वे? आई एम जस्ट ब्रेकिंग दिस इंटरवल ए टू बी in sub interval, very less sub interval like this. Suppose that this is this is your point x1, this is point x2, and so on. This is point x n -1. Suppose that like this, and this is your xn, and this is your x naught. So I'm just breaking this interval in this way. अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक छोटा सा इसको हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, एंड आई एम जस्ट टेकिंग दिस, दिस इज रेक्टेंगल। ओके, दिस इज रेक्टेंगल। ओके, this is rectangle, and similarly I'm just draw this thing and draw this here and here and so on in this way. तो हमने कुछ स्ट्रिप्स बना ली। अभी यहाँ पर लुक्स लाइक सम, यहाँ पर, और इनको ऐसे ऐसे क्लिक करा तो वी कैन सी इस तरीके से हमने स्ट्रिप्स बना ली। और अगर हम इनको अब कैलकुलेट करना था, तो हम अगर देखें, अगर इस एरिया को हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें इसकी विड्थ पता होनी चाहिए कि इसकी विड्थ कितनी है, दिस थिंग, और इसकी हाइट कितनी है ना। तो हाइट कहाँ से कैलकुलेट होगी? इस फंक्शन की वैल्यू से। अगर सपोज दैट हमने कहा ए, तो यहाँ पर हाइट कितनी है? एफ ए, दैट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट। अगर हम x1 की बात करें, तो ये हमारे पास पॉइंट फंक्शन की वैल्यू है, दिस इज एफ ऑफ x1, एंड सो ऑन। हेयर अगर हम बात करते हैं, तो दे हेयर द फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, एंड सो ऑन। ठीक, तो अगर हम बात करें, तो अगर हमें इस फर्स्ट जो हमारे पास रेक्टेंगल बना, अगर इसकी एरिया A1 हमें कैलकुलेट करना है, तो क्या होना चाहिए? इसकी हाइट एंड विड्थ। हाइट इज योर हाइट इज योर व्हाट? हाइट इज योर एफ ए, और विड्थ इसकी कितनी है? दिस इज फ्रॉम x1 टू x नॉट।
x1 to x0, because we have this x1 and this is first is x1 और x0 को हमने a बोला है, तो this is a into this is x1 is what, this is x1 minus a. ओके, तो ये इस तरीके से हर एक स्ट्रिप के एरिया a1, फिर a2 एंड a3 अप टू दिस इज योर यू कैन से an-1, ये सारे एरियाज को निकालेंगे. एंड इफ यू आर एडिंग ऑल दीज एरियाज a1 प्लस a2 प्लस a3, so you will get approximate area या approximate area of this covering. Okay, so this whole area you will get, and that is actually your different integral from a to b. क्लियर? ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है. ठीक है, तो हम इसको करने क्या वाले हैं कि बी रिड्यूस दिस स्ट्रिप लेंथ. ओके, सो हमने कहा कि हम हर एक स्ट्रिप की इक्वल लेंथ लेते हैं, एंड दैट इज योर एच. इसकी जो बिड्थ है उसको हमने यू कैन से x1 माइनस एक्स नॉट इज जस्ट इक्वल टू एच. तो इन सारे जो बिट्स बिट्स है वो एच बिट्स इनकी एच है. दिस इज x1 माइनस ए इज जस्ट इक्वल टू एच. तो x1 बराबर क्या आ जाएगा, दिस इज योर a प्लस एच. इसी तरह जब x2 निकालो जाओगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 2h, बिकॉज एक h और ऐड हो जाएगा. x3 कैलकुलेट करोगे, दिस इज a प्लस 3h, एंड सो ऑन. जब आप xn-1 कैलकुलेट करने जाओगे तो इट विल बी a प्लस n-1 इंटू h. तो दीज आर पॉइंट्स. अब हम जितना स्टेप इसका पतला करते जाएंगे, जितना ही छोटा करते जाएंगे, जितना बारीक करते जाएंगे, उतना अच्छा एरिया कैलकुलेट होगा. ये कह सकते हो कि बी एग्जैक्टली वी आर टेंडिंग टू द डेफिनेट इंटीग्रल. तो हियर बी विल increase decrease this h up to 0. This is h, I am choosing h as much as small, जितना हम कर सकते हैं. And because we are increasing the number of number, because when you are decreasing this h, then you will have to increase the number of points between a and b. So you are just increasing this n up to infinity. Okay, so n should be increasing and h should be decreasing up to 0. Okay, then you can get the area which just exactly equal to the definite integral. Clear? So what we are going to do, we just finding wait a second. Okay, so we just finding this area. Okay, this area in this way. Okay, so how we will get to, I'm just taking the first length, है ना, first length and breadth is your h. Okay, so the a1 will be what, the a1 will be what, a1 is just equal to h is your width, because all the strips of the h width. Okay, so we are now focusing on the height only, because we have to multiply each of the rectangle with this h, because h is width and we have to height. So the width will be multiplied with the height, we will get the very small, very you can say very less width with height the rectangle. Okay, so this h is multiplied with fa, this is your first. Then we are multiplied this area of the second strip, so this h is multiplied with the x1 will be what, a plus h, and this is a3 is just equal to h into f of a plus 2h. Clear? And this is a4 is just equal to h into f of a plus 3h. Okay, so this is a1, a2, and so on. If you are calculating, this is a nth जो आपका rectangle बनेगा, that will be of h into f of a plus n-1 into h. Okay, now you add all these areas. So you will add, this is h into fa, and plus this is h f of a plus h,
and plus this is h into f of a plus 2h, and up to this is h into f of a plus n minus 1 into h. Okay, so this thing is the sum of these strips, area strips. You will get some area approximate to the integral. Okay, so if you are taking h is outside, what is remaining here? This is your fa plus of f of a plus h plus of f of a plus 2h. Okay, so and so on up to f of a plus n minus 1 into h. Okay, so this is your sum. So how we will just calculate? So this becomes this is from a to b. ये जो definite integral का value है, that will be equal to this summation, this sum, when we are taking the limit as h is tending to 0, and this n matlab we are increasing the points between a and b, n is tending to infinity. Okay, so this, whatever this limit we will calculate, that is exactly the value of the definite integral a plus 2h, and so on up to this is f of a plus n minus. So this is actually concept of the how we finding the definite integral by using the sum of these values. Okay, so here we know that कि how many areas, how many you can say rectangles will be there. That will be n rectangles. So you know that the length of b to a, this is length, and because h rectangles are there, and each rectangle have your width your h, so n times, so b minus a will be equals to uh, n times h. So from here, if you want to calculate h, or you want to calculate n, so in the terms of n, you will calculate this is b minus a upon n, you just divide it. Or if you want to calculate n in terms of h, you can say b minus a divided by h. Okay, so this is the things we will able to do. So here you just remember b minus a is just equal to n times h. Okay, and already we just known that h, we will have to take h tending to infinity, n tending to infinity, and h tending to 0. Okay, so then you will get this formula. So this formula is basically known as the sum है ना, we are calculating the limit of the sum, so we can say definite integral written as the limit of the sum. Okay, so if you are writing in some short form, this is a to b of fx dx, because we are summing it, so there this is limit uh, limit, this is your n tending to infinity, we have to calculate this limit. Or we have this is h here, and this is writing the summation. This summation r is just equal to 0, and up to we are going to n minus 1. So we are starting from 0, h matlab 0, r0 plus 1 2 up to n minus 1. So here we can just write here, this is your a plus r times h. Okay, so when you expand, you will get the same result. So where we can just have this is nh is just equal to b minus a. Okay, so this is basically this is your formula for the definite integral. So how it comes, we understood है ना, कैसे हमारे पास फार्मूला आया. और ये अगर इतना ध्यान रहेगा तो तुमको इजीली फार्मूला याद रहेगा कि फार्मूला कैसे लिखा जाता है डेफिनेट इंटीग्रल. ओके, next, if we in this formula, if we just take for a is equals to 0, it means limit is from 0 to 1. Okay, so a is equals to 0 and b is equals to simply 1. I'm just taking here.
तो क्लियरली we can say we can say we have clearly we can have that is your n into h is just equal to b minus a. It means 1 minus 0. This implies this h becomes 1 upon n. Okay, so from for this interval from 0 to 1, if I'm just writing the interval from 0 to 1 fx, तो इसका इंटीग्रल हमें कैलकुलेट करना है जिसकी लिमिट 0 to 1 है। तो उसके लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे? Simply this is your fx is dx is just equal to limit limit this is n tending to infinity, that is okay, and here it will be summation r is just equal to 1 to n minus 1, and because a is 0 and this is r, or in the place of h we have 1 upon n, so this f will be this becomes this is becomes f of r upon n, ध्यान दीजिएगा, this is your r upon n, and this is your n into, so this is 1 upon n because 1 upon n in the place of h की जगह पर हमें क्या पुट करना, तो h is actually in this multiplication, in the outside भी लिख सकते हो, इसके साथ में भी लिख सकते हो, that is doesn't matter, but this summation is over this, okay, summation तो इतना ही है तुम्हारे पास, 1 upon n तो सम कांस्टेंट टाइप है क्योंकि जो समेशन है वो r पे मूव कर रहा है, तो दिस इज f ऑफ r अपॉन n, दिस इज इनटू 1 अपॉन n। तो बेसिकली अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है 0 to 1 ऑफ एफ एक्स डी एक्स के लिए, तो वी जस्ट अप्लाई लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी आर इक्वल्स टू 1 to n minus 1 एफ आर अपॉन एन एन 1 अपॉन n। तो ये तो एक तरीका होगा कि किसी डेफिनेट इंटीग्रल को हमें समेशन के फॉर्म में लिखना है। अगर कोई समेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको डेफिनेट इंटीग्रल में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो अगर सपोज दैट कि हमको कोई लिमिट कैलकुलेट करना है, दैट इज सम के फॉर्म में कोई लिमिट लिखी हुई है, उसका लिमिट कैलकुलेट करना है, तो एक तो ये तरीका हो गया। सो नाउ यू इफ यू वांट टू कैलकुलेट सम लिमिट, तो यू विल हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट द लिमिट इन दिस फॉर्म। आपको कोई भी लिमिट कैलकुलेट करना होगा उसको इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करके, मतलब इसको डेफिनेट इंटीग्रल में आप बना लीजिए, फिर उसके बाद उसका डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट कर लीजिए। तो यू वांट टू कैलकुलेट द लिमिट, तो फर्स्टली if you have limit like this, the summation r equals to 1 to n minus 1, and this is your f of r upon n into 1 upon n in this way, okay, where we just know n tending to infinity. Then you want to calculate you want to find the integral form, definite integral form for this limit. So first you convert all the limit in this form, and then what we have to do, you just replace uh, this r by n with x, okay, and this replace 1 upon n with dx, because 1 upon x 1 upon n will be there, so in the place of 1 upon n you just put dx, and simply for this summation, just for this summation, summation r equals to 1 to n minus 1, you just convert in the integral form from 0 to 1. So now if you want to calculate this, so what you have to observe, then r upon n form, r upon n is there, okay, तो r upon n को रिप्लेस करना है x से, 1 upon n को dx से, और जो समेशन है उसको आपको रिप्लेस करना है इंटीग्रल से, तो इट विल बी इक्वल टू 0 to 1 0 to 1 0 to 1, and this is your f, r upon n की जगह x लिखना है तो this is fx, and 1 upon n की जगह पर dx, so this now becomes the definite integral. Now you calculate the definite integral value, and that will be value of the limit of that series or some time of a function in n, okay, तो this thing you just remember। एक छोटी सी चीज है और हम बताएंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा
एक चीज ध्यान रखिए, इफ देर इज समीशन ऑन द लाइक दिस इज फ्रॉम K1 to R is equals to some K2, some होते ध्यान दीजिएगा, इस इट मे बी K1 K2 सम नंबर सम एनीथिंग समथिंग एल्स, कुछ n में ही कोई हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस इन दिस फॉर्म, डेफिनेट इंटीग्रल फॉर्म। तो जो अपर और लोअर लिमिट्स है वो जो चेंजेस होते हैं, ये जस्ट चेक किया, तो जस्ट R अपॉन n विल बी देयर, 1 upon n will be there, so you can just have limit. Now the limit, lower limit, here this is n tending to infinity, and this is k1 upon n, and this is limit n tending to infinity, and this is your k2 upon n. Okay, and this is fx dx. So the limit, the upper limit of the integral and lower limit of the integral is depending the summation, where the summation is from started. Okay, summation कहाँ से कहाँ पर स्टार्ट हुआ है। अगर हम इसी जो अभी हमने एक्सप्रेशन लिखा है, इस एक्सप्रेशन के लिए अगर हम करना चाहें, इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, दिस इज समेशन, समटाइम्स जब आप एडवांस लेवल में थोड़ा सा जाएंगे तो ये एक बेसिक सा फार्मूला जो अभी हम लोगों ने ड्राइव करा या फिर हमने देखा, ये बहुत सिंपल सा फार्मूला है, ये वाला, दिस वाला। बट अगर हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी समीशन होता है उसको कहीं से स्टार्ट करते हैं, कहीं पे एंड कर देते हैं, तो उतने पार्ट का अगर आपको इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है डेफिनेट इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करके, तो यू विल जस्ट, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द लिमिट्स, अपर लिमिट्स एंड लोअर लिमिट्स। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे हमारे पास कैलकुलेट करती हैं, तो बाई दिस फार्मूला यू जस्ट रिमेंबर कि व्हाट इज द लोअर सम एंड व्हाट इज द अपर सम, है ना, अपर में क्या है और कहाँ से आर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ना। तो अगर K1 से K2 पे जा रहा है तो लिमिट जो लोअर लिमिट हो जाए, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी K1 अपॉन n, एंड लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी K2 अपॉन n। अगर हम इसी अपने केस में देखते हैं जहां पर हमारे पास r बराबर 1 था, 1 से n-1 पे हम लोग जा रहे थे, f ऑफ r अपॉन n एंड 1 अपॉन n। सो इसका अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो दिस इज लिमिट n tending to infinity, n minus 1 upon n, okay, and this is limit n tending to infinity 1 upon n, because r is 1 here, and this is your fx dx. So from here you can simply see दो अपर लिमिट है वो क्या आ जाएगी 1 और लोअर लिमिट क्या आ जाएगी 0, दिस इज योर fx dx। ओके, so for this for your class of this course, you just remember this thing, there's no need to worry about. But if you going to some advanced level, for some you are going to finding the sum at all, because here जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट वो 0 to 1 ही आएगी, है ना, in each of the cases, if this limit from starting from 1 to n-1 or 1 to n, sometimes 1 to n पे हम चले जाते हैं, तो in each cases there no worry, you just apply this formula। okay, so this is your formula for the definite integral when you are, or some लिमिट अगर हमारे पास है, सम के फॉर्म में कोई लिमिट है, कोई सीरीज है, उसको हमें डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करके कैलकुलेट करना है उस लिमिट को, तो आप उसको पहले तो आर अपॉन एन, एफ को फंक्शन बना लेना है आर अपॉन एन का, एंड देन जस्ट 1 अपॉन एन हमारे पास होना चाहिए जिसको हम रिप्लेस करेंगे dx से। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स। ओके, तो आइए एक सवाल करते हैं जो LU 2003 में पूछी गई प्रॉब्लम है, आपके एग्जाम्पल ही है आपके एक्सरसाइज आपके टेक्स्ट बुक में। सो दिस इज एग्जाम्पल वन ओके, दिस इज LU 2003 में ये सवाल पूछा गया था। ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन, evaluate integration from a to b x square dx। ओके, सो डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है बाय द डेफिनेशन ऑफ, तो फ्रॉम द definition of a definite
integral, definite integral as the limit of sum. तो इसको लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन वी हैव टू कैलकुलेट दिस लिमिट। अगर हम इंटीग्रेशन जानते हैं तो इजीली वी नो कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। सिंपली वी नो दैट व्हाट इज द इंटीग्रेशन, इसका डेफिनेट इंटीग्रल। इसको हम करते हैं, यह आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड देन यू अप्लाइंग द लिमिट ए टू बी, सो इट विल बी बी क्यूब अपॉन 3 माइनस ऑफ ए क्यूब अपॉन 3, and from here you can just say b cube minus a cube divided by 3, and this is your simply you will get this. But I'm not going to do in this way. We have to use this definition. Okay, so let's start to doing the problem. So it means we know the answer will be this. Okay, so let's start the solution. So we have to okay, we have to calculate this limit, this integration we have to calculate. So here you can see here fx is what? This is simply x square. Okay, and we know this हम h को इंक्लूड करते हैं तो n into h will be what? b minus e will be b minus e, or in this way we are going to do. So simply fx is your x square. So अगर हम इसको लिमिट एंड सम के फॉर्म में लिखें तो क्या फार्मूला हम लोग यूज करते हैं? दिस विल बी एक्स स्क्वायर ऑफ dx and this is equals to limit, and clearly this is h should be equal to tending to 0 and n is tending to infinity, and we multiply h, and in this way we have this is fa. Okay, and then you have to f of a plus h, and this is f of a plus 2h, and so on up to f of a plus n minus 1 into h, this thing we have. ओके, तो यही तो होगा यहाँ पर एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और दिस इज n टेंडिंग टू infinity, so h is okay. fa means a square, okay, and then a plus h whole of square because x square is there, and this is a plus 2h whole of square, and so on. This is your a plus n minus 1 into h whole square. Got it? So the simply just putting the values. Now we have to rearrange the terms. So for this limit, this is h tending to, this is your a square, and when expanding this, so a plus b ka whole square, so this is a square plus ka 2ah plus of h square, and plus this is a square plus ka 2 into 2ah, okay, and plus of 2 square into h square, and so on up to this is your a square plus ka 2 n minus 1 into h, and a is also there, and plus this is n minus 1 whole square into h square. So this thing we will get here. Okay, so now you can see clearly this is limit, and limit is also s tending to 0 and n is tending to infinity, so I'm not going to write in all the time. So here a, and you know that we starting from not 0 and we moving to n minus 1. It means these terms are n terms. This total are n terms. So it means a square, a square, a square, it will be comes with the n times. So you can just writing here n times a square, okay? And plus this is 2ah, 2ah, and so on
So if you are just taking 2ah is outside, you are taking outside, so it will be remains here 1 is remaining, here 2 will be remaining, here means 3 will be there in another term. Okay, because 2, 3, 3ah and so on, and be remaining up to n minus 1 time. Okay, and in the last one we have h square, and this is your h square, and so if taking h square outside, uh, if you're taking h square outside, so what is remaining here? 1 1 1 बचेगा पहले, तो एच स्क्वायर, फिर प्लस में 2 का स्क्वायर बचेगा, प्लस 3 का स्क्वायर बचेगा, एंड सो ऑन अप टू दिस इज n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज, इसमें भी स्क्वायर लगा दो, तो ये फार्मूला बन जाएगा ना, नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का फार्मूला। सो फ्रॉम हेयर दिस इज लिमिट s tending to 0 and tending to infinity, this is h is here, n a square plus 2ah, and now we just the sum of n terms, n minus 1 terms। okay, तो क्या होता है n minus 1, n plus 1 by 2, it means this is your n minus 1 into n divided by 2। okay, and for the इधर एच स्क्वायर, और इसके लिए हम सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स, तो उसका फार्मूला क्या होता है? 1/6 n, n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1, ये होता था। सो अगर हम यहाँ पर n माइनस 1 तक जाना है, तो दिस इज 1/6 n माइनस 1, एंड दिस इज n प्लस 1, इट मीन्स n, and this is 2n, it means 2n minus 2 plus 1, it means 2n, it will be remaining 2n minus 1। okay, तो here will be 1/6 n, n minus 1, एक टर्म ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2n minus 1। ये हमारे पास रिजल्ट बना। ओके, सो आइए जरा देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। इस एच को भी अगर अंदर हम भेज देते हैं, तो सिंपली वी हैव लिमिट h tending to 0 and tending to infinity, so it will be have um, n h a square plus का 2ah square n n minus 1 by 2, and plus this is h cube 1/6 n n minus 1 and 2n minus 1। got it? now हमें पता है कि दिस एन एच को हम क्या कहता है, b माइनस ए। तो फ्रॉम हेयर in the place, each term will be have some value, so in the place of we can put it here। so so I'm just converting each terms in the form of h। okay, so in the place of n, you just putting, in the place of n, you just putting, in the place of n, I'm just putting b minus a, b minus a divided by h। okay, in the place of n। so let us put it here। so in this term, that is, this is okay, I'm just putting here is okay। let us calculate this term, uh, here 2a h square, so 2a h square, and in the place of n we putting b minus a divided by h। okay, and here we are putting b minus a divided by h minus 1 divided by 2।
सो वी जस्ट कैलकुलेटिंग दिस, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये एच एच स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, दिस इज ए बी माइनस ए। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा बी माइनस ए माइनस एच, बिकॉज एच हमने इस एच को कैंसिल करा। तो दिस टर्म्स इज रिमेन्स हियर। ओके, दिस टर्म इज रिमेनिंग इन दिस वे, और इन दिस वे एच क्यूब 1/6, this is b minus a upon h. Okay, this is your b minus a upon h minus 1, ये हो गया एक टर्म, और this is 2 times b minus a divided by h माइनस का 1। सो एच क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/6, बी माइनस ए, एक टर्म हो जाएगा बी माइनस ए माइनस एच, ये हो गया, दिस इज 2 टाइम्स बी माइनस ए माइनस ऑफ एच, ये हमारे पास बचेगा। ओके, सो अगर हम इन सबको रिप्लेस करते हैं, एन एच इक्वल्स टू बी माइनस ए, या एन की जगह पर बी माइनस ए रखते हैं, तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचेंगे, तो नाउ बिकॉज वी आर रिप्लेसिंग एच इन टर्म्स ऑफ रिप्लेसिंग दिस एन इन टर्म्स ऑफ एच, तो हमारे पास जो टर्म्स बचेंगे वो कैसे बचेंगे, लेट अस सी। तो दिस इज लिमिट नाउ we have only h tending to 0। ओके, सो एन एच ए स्क्वेयर, तो यहां पर जब हम लिखेंगे एन की जगह पर बी माइनस ए अपॉन एच, तो एच से एच कैंसिल, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास एन की जगह पर, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ए स्क्वेयर एंड ब्रैकेट में बी माइनस ए। ओके, एंड जो सेकेंड टर्म है उसमें तो ये टर्म बच रहा है ए ऑफ बी माइनस ए, एंड दिस इज बी माइनस ए माइनस एच, ये बचेगा, और जो थर्ड टर्म है वो जाएगा 1/6। हाँ, 1/6, 1/6 इट विल बी, क्या बचेगा तुम्हारे पास, दिस इज बी माइनस ए, दिस इज बी बी माइनस ए माइनस एच, एंड दिस इज 2 ऑफ बी माइनस ए माइनस एच, ये हमारे पास टर्म्स बचेगी। नाउ यू जस्ट अप्लाई द लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो जहां जहां एच है उसकी जगह पर 0 हो जाएगा, तो इट विल बी हैव, दिस इज योर ए स्क्वायर ब्रैकेट में बी माइनस ए, प्लस का दिस इज योर ए इंटू बी माइनस ए का होल स्क्वायर, बिकॉज एक टर्म यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज 1/6 बी माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस ए, और यहाँ पर 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 बी माइनस ए का होल क्यूब। ओके, so here you will get, this is your a square b minus a, and plus this is your a b minus a whole square, and this is 1/3, and this is b minus a का whole cube। so let us see, हमारे पास जो कॉमन टर्म मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, तो हमने 1/3 बाहर ले लिया, 1/3 बी माइनस ए को हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ए ऑफ बी माइनस ए, एंड दिस इज प्लस दिस इज बी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो 1/3 दिस इज बी माइनस ए। ओके, एंड हेयर इट विल बी 3a² प्लस का 3ab माइनस का 3a² एंड प्लस का b² प्लस a² एंड माइनस का 2ab, तो क्या मिलेगा तुमको, दैट इज 1/3 बी माइनस ए, एंड इन दिस ब्रैकेट यू जस्ट कैंसिल इट आउट, दिस इज योर a² प्लस ab and plus of b², and this is actually formula of b cube minus a cube। Okay, so this is 1/3 b cube minus a cube। Okay, so this is your definite integral। Okay, so this implies the definite integral from a to b of x square of dx just equal to 1/3 of b cube minus of a cube।
Clear? So this is the formula. This is the answer by using the sum of limit of a sum. ओके, तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। आइए एक सवाल उस पे कर लेते हैं जिसमें हम किसी लिमिट को इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके कैसे करते हैं। ठीक है, तो लेट्स डू अनदर प्रॉब्लम दैट इज बेस्ड ऑन दैट। चलिए एक एक्सरसाइज की प्रॉब्लम कर लेते हैं कोई। हम्म, तो एक कौन सा ले लें क्वेश्चन। चलो यही ले लेते हैं, अच्छा सवाल है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 आपका। इसमें क्या करना है कि हमारे पास लिमिट है, उसको डेफिनेट इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट करके करते हैं। अभी हमने क्या करा था कि डेफिनेट इंटीग्रल था और उसको हमने लिमिट ऑफ अ सम के फॉर्म में कन्वर्ट करा, देन वी हैव कैलकुलेटेड द डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, सो ये प्रॉब्लम उसके ऊपर बेस्ड है, तो आइए इसको डिस्कस कर ले प्रॉपर तरीके से। तो इसमें क्या है प्रॉब्लम, फाइंड द लिमिट, find the limit as n tending to infinity of the product, this is the product actually, this is 1 plus 1 upon n, okay, 1 plus 2 upon n, okay, 1 plus 3 upon n, okay, dot dot dot, this is 1 plus n upon n की पावर 1/n। ये आपको इसका लिमिट कैलकुलेट करना है एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ओके, तो आइए जरा कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप करिए क्या, इस प्रोडक्ट को ए मान लीजिए। ठीक है, सो आई एम जस्ट टेकिंग हेयर, लेट दिस इज ए इज जस्ट इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एन, 1 प्लस 2 अपॉन एन, 1 प्लस 3 अपॉन। जब कभी प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिल जाए तो वी जस्ट टेक इक्वेट एंड देन टेक द लॉग, है ना, हमें लॉगरिथमिक लेना पड़ेगा यहाँ। तो दिस इज 1 अपॉन एन। ओके, so now taking log, so basically we have to calculate this is limit n tending to infinity of this a is what, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, टेकिंग log on both sides। so जब हम log ले लेंगे तो ये हो जाएगा log a, you know that कि log of m की पावर n इज जस्ट इक्वल टू n log m, है ना। तो हम यहाँ से 1 अपॉन m हमारे पास बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा दिस इज log of this 1 plus 1 upon n into 1 plus 2 upon n up to this is 1 plus n upon n। और एक चीज और हमें पता है कि log of टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज जस्ट इक्वल टू log m प्लस log n, ये होता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो दिस बिकम सम समेशन। ओके, तो दिस इज log of a is just equal to 1 upon n, this will be log of 1 plus 1 upon n plus this is log of 1 plus 2 upon n plus up to this is log of 1 plus n upon n। okay, this looks like this। okay, तो अब इसको हम थोड़ा सा समेशन के फॉर्म में लिखेंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट द लिमिट। so this will be log of a is just equal to 1 upon n and we can write summation
r is equals to 1 to n, because moving from 1 to n. This is log of 1 plus this is your r upon n. Okay, this is looks like this way. Clear? अब ये फंक्शन हो गया पूरा. दिस इज फंक्शन इन आर अपॉन एन, है ना. तो दिस इज लुक्स लाइक दिस इज एफ ऑफ आर अपॉन एन टाइप का. 1/n हमारे पास सही है. हम r इक्वल्स टू 1 to n जा रहे हैं, तो इसको हम अब डेफिनेट इंटीग्रल में कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी, अगर हमें लिमिट चाहिए. क्योंकि नाउ इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द लिमिट where n tending to infinity of log of a, so this is actually limit n tending to infinity, this is 1/n summation r is equals to 1 to n. This is log of 1 plus r upon n. ठीक. तो अब ये हमारे पास जो है इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में हो जाएगा 0 to 1. ऑब्वियस सी बात, r से n जा रहे हैं, इसका मतलब 0 to 1. और ये हो जाएगा फंक्शन log 1, r अपॉन n की जगह क्या रखना है, x. दिस इज x इंटू dx. ओके. और इसमें आप फार्मूला लगा सकते हैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाला. ओके. सो आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग 1 हेयर. सो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन हो गया ये, और ये सेकंड फंक्शन हो गया. तो फर्स्ट फंक्शन बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन हमें पता है. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन. तो यहाँ पर हम फर्स्ट फंक्शन इसको मानते हैं लॉग को, और इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं 1 को, है ना. तो लॉग ऑफ 1 + x एंड इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, x. तो यहाँ पर x आ जाएगा. तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा. दिस इज फ्रॉम 0 to 1. एंड नाउ इंटीग्रेशन 0 to 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन. लॉग का डेरिवेटिव लॉग 1 + x का, तो ये हो जाएगा 1 + x, ये हो जाएगा, और इंटू x, और ये dx. ओके. सो यहाँ पर हम देख रहे हैं x अपॉन 1 + x है. इसको सिंपली आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो. दिस इज लाइक दिस 1/1/1 + x इन दिस वे. तो 1 + x कैंसिल होके ये बचेगा. तो इन द प्लेस ऑफ दिस यू कैन राइट. तो यहाँ पर एक चीज आप देख रहे हैं, जब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर जब आप 1 पुट करेंगे तो 1 log 1 + 1 इट मीन log 2. एंड जब 0 पुट करेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इट विल बी log 2 - 0, ये आ जाएगा. एंड माइनस यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, एंड दिस इज योर 1 - 1/1 + x ऑफ dx. ओके. एंड देन इट जस्ट इक्वल टू log 2 माइनस, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास x, और इसका log 1 + x आ जाएगा, है ना. इंटीग्रेशन 1/x का क्या होता है, log x होता है. एंड देन यू अप्लाई द लिमिट 0 to 1. तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास log 2. ओके. माइनस जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 0, ये आ जाएगा टर्म, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड दिस विल बी योर log 2 - 0 इन दिस वे. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज log 2 -1, एंड दिस इज प्लस ऑफ log 2. तो इट मीन्स इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ log 2. एंड इस 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज log ऑफ e, है ना. e की वैल्यू 1 होती है. तो फ्रॉम हेयर यू कैन जस्ट हैव log 2 to 2 डिवाइडेड बाई e, बिकॉज log ऑफ m upon n is just equal to log m minus log n. Okay. So from here you will get this is log 4/e. ओके. तो यहाँ पर जो हमारे पास था दैट इज log, एंड दिस इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी a is just equal to this. तो this implies antilog by antilog. So this implies जो लिमिट है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी of this a is becomes equal to 4/e, है ना. दिस इज योर आंसर.
So you can say this is implies this is limit. So n tending to infinity of the what was the function? Okay. So this is 1 plus 1 upon n, 1 plus 2 upon n, up to this is 1 plus n upon n, इसकी पावर 1 अपॉन n, है ना। और इसका वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू आएगी 4/8। तो दिस इज, तो इसमें हमने क्या करा कि हमने पहले उसको समेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करा जो हमारे पास रिक्वायर्ड होता है, फिर उसमें हमने रिप्लेस करा, r/n को x रखा, और फिर हमने डिफरेंट इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करी, एंड देन वी विल गेट द लिमिट ऑफ द दिस दिस प्रोडक्ट। ओके। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें प्रॉब्लम्स को करना है और किस तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे पास आ सकती है। ओके। तो आप अपनी एक्सरसाइज को ट्राई करिएगा। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कि ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर दिस हमें सर बता दीजिए, तो हम उसके लिए अलग से रिकॉर्ड कर देंगे, बट आपको कमेंट करना होगा, आपको बताना होगा, और उसमें ये भी लिखना होगा कि सर आई हैव ट्राइड दिस प्रॉब्लम एटलीस्ट 3 टाइम्स। ओके। सो आप जो जो भी बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है आप हमसे प्रॉब्लम्स पूछिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन करना तो लाजमी नहीं होगा कि हम हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करें आपके साथ में, बट हम कोशिश करेंगे कि हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, और आपको जिस प्रॉब्लम में आप अपने एक्सरसाइजेस को करिए, एग्जाम्पल्स तो सॉल्व रहते ही है तो उनको देखिए कि कैसे सॉल्व किया गया है, और उनकी प्रैक्टिस करिए। बाकी अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में दिक्कत है कि सर मुझे ये क्वेश्चन बता दीजिए, तो हम आपको बताएं। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आई एम जस्ट राइटिंग द नंबर, व्हाट्सएप नंबर फॉर यू। ठीक है, हम आपके लिए लिख दे रहे हैं कि आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, दिस इज 9369920986। ओके। आप अपना नेम एंड कॉलेज, ठीक है, और ऑब्वियस सी बात, अगर आप इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो आप बीएससी या बीए मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। ओके। तो आप अपना क्लास भी लिखिएगा यहाँ पर, या फिर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके उसमें आप लिखिएगा कि हाँ सर मैं अपने नॉलेज इनहेंस के लिए पढ़ रहा हूँ। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम, पर्टिकुलर प्रॉब्लम में डाउट है तो यू कैन टेस्ट मी। अगर समय मिलता है तो मैं उसका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, रिकॉर्ड कर दूंगा वो सोल्यूशन। ओके। बाकी आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, और उसके बाद अपने से आप पढ़ने की कोशिश करिए, अपने से एक्सरसाइजेस को करिए, है ना। कोशिश करेंगे कि हम एक्सरसाइजेस की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम एमसीक्यूज कुछ डिस्कस कर देंगे, 10-15 एमसीक्यूज आपको इसी चैप्टर के पढ़ा देंगे, सॉल्व करा देंगे यहाँ पे, एंड कि कैसे हमें फ्रिक्वेंटली वहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर को देखना है। और तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है इस फार्मूले को याद रखना कि कैसे हमें पर डेफिनेट इंटीग्रल को हम लिमिट ऑफ अ सम के फॉर्म में बदल सकते हैं, या कोई अगर हमारे पास लिमिट कैलकुलेट करना करना है तो उसे हम डेफिनेट इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इतनी अगर आप बात ध्यान रखें और आपने प्रैक्टिस कर ली तो आप इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन जो है आपको कम्पिटिटिव्स में, जो हायर मैथमेटिक्स के कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पाया जाता है, एंट्रेंसेस एग्जाम्स में पाया जाता है, सीएसआई या नेट के अंदर एक प्रॉब्लम्स आ चुकी है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, और जैम आईआईटी जैम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से सीखिए, और कहीं कोई डाउट रह जाता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, प्लीज़ कमेंट, और अच्छा लगता है आप सीख पाते हैं कुछ तो लाइक एंड शेयर विद अदर्स। सबसे इम्पोर्टेंट है जितने भी स्टूडेंट तक हमारे लेक्चर पहुंच सकते हैं, दैट विल हेल्प टू द स्टूडेंट्स। सो ओके, तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग मैथमेटिक्स with me. Thank you so much.